Hello everyone, I am Anjna Verma from SIRTE Computer Science Department. Now today we start Unit 3, that is Software Design of Software Engineering CS 403. The third unit start with the software design, or we can say this unit is devoted for the software design. Now what is design? Design means from the SRS which we have made in previous lecture, जो हमने बनाया था SRS, software requirement specification. With the help of that SRS, we will derive the solution because we want to implement. तो जब हम SRS बना लेते हैं, after that हम क्या करते हैं? Derive the solution means design करते हैं and then we will implement it. We can see the relationship between the analysis model and design model. In previous unit आपने देखा होगा कि हमने दो तरह की मॉडलिंग की थी, फंक्शनल मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, जिसमें सारे तरह के ऑल ऑफ द डायग्राम्स हमने देखे थे. डेटा फ्लो डायग्राम विच इज रिलेटेड विद द डेटा, डेटा डिक्शनरी विच स्टोर डेटा इन metadata. Metadata means data about data, means every data we store in data dictionary you have to describe what is the name of data, what is the type of data, how many memory the data will engage, what is the use of data, and this all will be stored in data dictionary. So with the help of data dictionary, with the help of और कहाँ से आया है ये डिजाइन, with the help of ER diagram we make data design. यानी कि जो डिजाइनिंग पार्ट में हम ये 4 लेवल बनाते हैं. फर्स्ट हम ये डिजाइन करेंगे कि हमारा डेटा क्या होने वाला है, which type of database we are using to store data, because data storage के बिना you can't make any software. It's impossible. If छोटा सा भी आप login password लगा रहे हैं, then you have to make a database login password. You have to store the name of user ID. You have to store the password of user ID, because whenever that user use this login, it will enter user ID, it will enter password, and when these two things will match in the database, after that he can open that data. Okay, so we will make with the help of this entity relationship what are the attributes. Okay, we make data design. After that, when we decide what is the design of data, we design architecture. Architecture design means which type the data will use. क्या data हमारा client server approach में काम कर रहा है, one person is the server and all are the clients. When client requests, the server responds. After that, interface design, architecture design will come from the data flow diagram, means which type of data will flow, उसके हिसाब से architecture design किया जाता है. उसके बाद interface means when we interact with the user and when user interact and submit something that should store in database and all this. तो interface design कहाँ से हम देख कर बनाएंगे. What are the state transition diagram? State transition diagram means with the help of event, we can change the state of an item. Okay. For example, a door is there. When you push the door, state will open. When you pull the door, state will close. तो इस तरह से हम स्टेट डायग्राम के थ्रू और डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू इंटरफेस डिजाइन करते हैं. एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग, जो भी चीजें बनी है उसमें कंपोनेंट्स अलग अलग करके हम अलग अलग पार्ट में अपने पूरे प्रोजेक्ट को बांट के यू डिकम्पोज योर प्रोजेक्ट इन स्मॉल पार्ट्स एंड डू इट. यदि आप पूरा प्रोग्राम एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी इम्पॉसिबल. कोई भी इवेंट होता है, आप यदि कोई मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं तो यू डिकम्पोज इट. One can make edit menu, one can make file menu, one can make like this. So component level design, which component will be done by which person or what is will be done in that component.
ओके एक चीज का ध्यान रखेंगे कंपोनेंट लेवल डिजाइन में कि इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट। यदि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है तो जब तक पहला नहीं होगा दूसरा नहीं चल पाएगा। सो वी हैव टू डिकम्पोज द कंपोनेंट्स very carefully. So every component will work differently or separately. After that, what is the design stages? Problem understand, which we have done in SRS. After that, we identify the solution. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन। ऐसा होता है ना कि इस प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशन है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह आना, वी कैन गो बाय 4 वेज। एक बंद है तो वी कैन गो बाय अदर। देन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस, उनको डिस्क्राइब करना एंड हर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमें क्या दिखाना है, व्हाट विल द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके डिजाइन प्रोसेस में एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लेना चाहिए सो वी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि which thing relate with which thing, and there will be a several level of abstraction. डिजाइन स्टेजेस कभी भी ऐसी नहीं होंगी कि एक स्टेज खत्म होने के बाद ही यू कैन स्टार्ट अनदर स्टेज, दे कैन ओवरलैप। ओके वी कैन अंडरस्टैंड दिस डिजाइन प्रोसेस वेरी वेरी मतलब कहना चाहिए आराम से एंड इजीली with this diagram. First thing, we have made the SRS requirement as specification. After that, we design architecture. Architecture can be designed. आर्किटेक्चर में हम ये देख लेंगे कि हमें क्या आर्किटेक्चर रखना है, किस टाइप का रखना है। जैसे मैंने भी बताया था कि आप आर्किटेक्चर इस तरह का बना लेंगे कि क्लाइंट सर्वर अप्रोच रखना है या आपको प्रोसेस रिटर्न अप्रोच रखना है। अदरवाइज बहुत सारे अप्रोचेस हैं, वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन एंड विच अप्रोच विल बी फॉलोड। जो अप्रोच आपको सही लग रहा है, इन दैट अप्रोच what will be the abstraction specification which you want to show. After that you define the software specification. After that, with the help of these software specification, you can design interface. When you design interface, then you can design the components. With the help of component specification, you can design data structure, and then you can design the data structure. With the help of data structure, you can design the algorithm. So I think ये chart is very useful and very important. Whenever ask what is design process, you may make this chart and you will get very good marks. Now you can see those phases. Architecture phase means identify the subsystems, क्या क्या उनके सबसिस्टम्स रहेंगे, किस टाइप के अप्रोच। आई थिंक टोपोलॉजीज में आपने जो सीखा था दैट इज आर्किटेक्चर डिजाइन। उसमें आपने जैसे स्टार टोपोलॉजी और सेंट्रलाइज टोपोलॉजी, क्लाइंट सर्वर फोटो, ये सारी चीजें टोपोलॉजी में यू हैव डन। वही आपका आर्किटेक्चर होता है कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हाउ विल यू कनेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में again हम abstract specify करेंगे, interface component, all those we have done in the diagram. These stages are written here. With this I'm closing this this lecture and